हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के सेशन में हम करने वाले हैं चंद्र नमस्कार यानी मून सैल्यूटेशन। तो चंद्र नमस्कार बेसिकली हम साइड वेज स्टार्ट करते हैं। 14 स्टेप का ये सैल्यूटेशन होता है और ये जो चंद्र नमस्कार है वो जनरली हम हमारी जो एनर्जी का फ्लो है वो कम करने के लिए, बॉडी और माइंड को शांत करने के लिए करते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम जो है वो इवनिंग में है। अगर आप सन सैल्यूटेशन की प्रैक्टिस मॉर्निंग में करते हो तो आप चंद्र नमस्कार की जो प्रैक्टिस है वो इवनिंग में कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी और माइंड शांत होता है और एनर्जी का जो फ्लो है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वी विल स्टार्ट विद द राइट साइड। तो राइट साइड में आ जाएंगे। दोनों भी पैरों में हिप डिस्टेंस रहेगा। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। Slowly raise your heels, stretch and relax your relax your heels down. Now bend to the left side. Inhale, come up. Right side. Center. Now lift your left leg up. Put it on the sideways and just bend your knee, bend your both elbows. Go as down as much you can. Breathe here. Now straighten your legs, hands and bend to the right side in a trikonasana. Again, left hand down, dono bhi knees straight and go forward. Try to touch your forehead to your knee. Gently bend your left leg down, left knee down on the mat. Relax your toe. Lift your both hands. Raise and be there. Exhale. Both hands down and sit on the one side like this. Now come to center and switch to the other side. ये सेम सीक्वेंस हमें लेफ्ट साइड से भी करना है. Turn to the left, relax your toe, relax your knee, lift your both hands up. Exhale down, both knees straight. Try to go forward. Inhale. Now lift your right hand up. Slowly come up. Bend your knee, bend your elbows and lift your right leg. Come to left side. Again take hip distance apart. Both hands up. Bend to the right. Bend to the left. And slowly relax. Now this is the half round of Chandra Namaskar. So we are going to do it from the left side to the right side as well. So again, take shoulder distance in between your both legs. Inhale, lift your hands up. Bend to the right. Bend to the left. Lift your right leg and bend your knee, your elbows. Try to go down as much as you can. Both hands straight. Now, Trikonasana. Bend to the left side. Now, right hand down and go down, forward bend. Keep your both knees straight. Try to touch your forehead to your knee.
Now bend your right knee down, relax your right toe, inhale, lift your both hands up and hold. Exhale down, try to sit to the left side. Come to center, and again we are going to do this on the right side. So sit on the right side, turn to the right, left knee on the ground, relax your left toe, inhale, lift your both hands up, relax both knees straight, try to go forward. Now Trikonasana on the right side, so lift your left hand up, inhale, come to center, again bend your both hands, both elbows and knees, go down as much as you can, lift your left leg, come to the right side, again both hands up, bend to the right, bend to the left, right, and relax. So this was our first round of Chandra Namaskar, and you can do it in the various counts as well. तो जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे ही हम चंद्र नमस्कार करेंगे. आप 12, 24 या फिर उसकी 12 की ही मल्टीप्लिकेशन में आप ये चंद्र नमस्कार कर सकते हैं. एंड चंद्र नमस्कार करने का बेस्ट टाइम है इवनिंग में, क्योंकि ये जो है हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है, माइंड को रिलैक्स और काम करता है. सो आप अगर इवनिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपको बॉडी रिलैक्स होने के बाद में अच्छी नींद भी आएगी. So that's it for today. I will see you in the next video.